Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now some of you have asked a question, sir, what is wait list, what is reserve list, what is the possibility of selection if we are placed in a reserve list or wait list. Now if we look at this nomenclature, these are used by various organizations. Some organization use the reserve list word, some organization use the wait list word. Almost meaning is similar, but there may be some differences also in their you can say clearance of that list. Now IBPS use the term reserve list. So in say RRB selection, they have placed certain candidates under reserve list, and certain candidates are clear candidates. Those are clear, that means they will get the chance to join the banking as and when these banks will call them for DB and other processes. Reserve list candidates have to wait for future vacancies or refusal of vacancies or non-joining or future demand by the banks, and if some demand comes, then the IBPS may release or allot candidates one by one from the reserve list. So once you are placed in reserve list, you may get a chance to get the job, you may not get the chance to get the job. So any candidate who is under reserve list, he should continue to focus on future examination. That is my advice. Now what is wait list? Say in case of IBPS clerk, PO, SO, also they use the term reserve list. So reserve list mechanism I have discussed. But State Bank of India use the term wait list. Certain other organization also use the term wait list. Now in State Bank of India, for PO there is no wait list. But for clerical cadre, they declare the wait list at a subsequent intervals. So on the day of result, there is no wait list. But they have a system of wait list release. After 3 months, 6 months, 9 months time, the time is not fixed, but usually it is between 3 to 4 months from the date of final result. First wait list, second wait list, third wait list. In State Bank of India, this is equivalent to the 50% of vacancies that is declared initially. That is the upper ceiling. So the total wait list candidate may be less than 50% or up to 50% of the original shortlisted. Similarly, IDBI and other organization, they sometimes declare the wait list side by side. Wait list means you have to wait for some more time, and if vacancies arises, you will be cleared. So reserve list candidate and wait list candidate have to wait longer. Sometimes they get the job, sometimes they don't get the job. So reserve list is simply a sort of a mechanism which gives opportunity to more candidates by one selection. Because on selection you can only give a clear list of candidates equivalent to number of vacancies already declared. But sometimes the vacancies may arise on account of non-joining, may account of refusal to join, maybe some process. In some banks they may identify vacancy later on, and they may like to take candidates from IBPS or other organizations. So the reserve list candidate has a chance, but it is not definitive chance. This we have to always clear in mind. And if one is placed under reserve list, he should continue to prepare for future examination. That is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब आप में से कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर रिजर्व लिस्ट क्या होती है, वेट लिस्ट क्या होती है, और ये किस तरीके से ऑपरेट करती है और इसका क्या फ़ायदा है. अभी आपने देखा होगा आज IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 का रिजल्ट आया है, या आने वाले दिनों में IBPS PO SO और IBPS क्लर्क का रिजल्ट आएगा. तो IBPS में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको वो बोलते हैं रिजर्व लिस्ट. रिजर्व लिस्ट वो कई बार 10% कैंडिडेट्स की होती है, कई बार ज़्यादा कैंडिडेट्स की होती है. तो एक लिस्ट तो वो ही कि जितनी वैकेंसीज हैं उतने क्लियर हो गए कैंडिडेट्स, तो उनको इमीडिएटली जैसे जैसे बैंक कॉल करते जाएंगे DB के लिए उनको जॉब मिलती जाएगी. मगर कुछ कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में प्लेस कर दिया जाता है, वो सब्जेक्ट टू
अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड होती है कि आने वाले दिनों में यदि रिफ्यूज़ल होती है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ और वैकेंसीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तो ये जो रिज़र्व लिस्ट के कैंडिडेट हैं ये एक एक करके रिलीज़ होते हैं। यूजुअली 3 से 4 बार रिज़र्व लिस्ट की एलोकेशन होती है साल के अंदर, तो अगले साल तक ये एलोकेशन चलती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं रिज़र्व लिस्ट मैकेनिज्म। तो रिज़र्व लिस्ट में जो कैंडिडेट है उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 100% उसको जॉब मिलेगी, पर पॉसिबिलिटी है। इसलिए जो भी व्यक्ति रिज़र्व लिस्ट में है उसको अपनी आगने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना चाहिए। अब कई बैंक इसको वेट लिस्ट बोलते हैं, रिज़र्व लिस्ट ना बोल के। जैसे स्टेट बैंक है वो वेट लिस्ट वर्ड यूज़ करता है, ऐसे IDBI है वेट लिस्ट वर्ड यूज़ करता है। वेट लिस्ट क्या है? SBI PO में कोई वेट लिस्ट नहीं होती, मगर जो SBI जूनियर एसोसिएट है उसमें एक मैकेनिज्म है वेट लिस्ट का। अब वो वेट लिस्ट रिजल्ट के दिन नहीं अनाउंस करते हैं, वो सब्सिक्वेंटली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने के अंदर फर्स्ट वेट लिस्ट, सेकेंड वेट लिस्ट और थर्ड वेट लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। और नॉर्मली जो रिफ्यूज़ल होती है या जो रेजिग्नेशंस होती है उसके आधार पर वो वेट लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स को लेते हैं। वेट लिस्ट लगभग 50% कैंडिडेट का वो लेते हैं SBI के केस के अंदर। वो अपर सीलिंग है, 50 से कम भी हो सकते हैं कैंडिडेट, 50% तक भी हो सकते हैं। तो जो उनकी इनिशियली डिक्लेयर्ड वैकेंसीज हैं उसके 50% तक लेते हैं। और यूजुअली स्टेट बैंक जो रिफ्यूज़ल्स होती हैं ज्वाइनिंग की या नॉन ज्वाइनिंग होती है या ज्वाइन होने के बाद कैंडिडेट रिज़ाइन कर जाते हैं, उनके बेसिस पे वो लेती है। जबकि IBPS के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिफ्यूज़ल से ही हो, IBPS में ये ज़रूरी नहीं है वो रेजिग्नेशन से ही हो। अगर कोई भी बैंक डिमांड रखता है, चाहे वो नई वैकेंसी आइडेंटिफाई करके भी डिमांड करता है, तो वो रिज़र्व लिस्ट से क्लियर हो सकती है। तो रिज़र्व लिस्ट हो गया एक तरह का, उन्होंने बफर स्टॉक क्रिएट कर दिया कि ये लोग बहुत नज़दीक थे सिलेक्शन के पर नहीं हुए, तो अगर कोई बैंक डिमांड करेगा वहाँ से वो दे देंगे। वेट लिस्ट के अंदर भी जो कट ऑफ में नहीं आए स्टेट बैंक के और बाद में उनको दिखता है कि भाई कोई रिफ्यूज़ल्स है या लोग नॉन ज्वाइनिंग है, इनको नेक्स्ट नंबर को मौका देना चाहिए, तो वो 3 महीने 4 महीने बाद पहली लिस्ट निकाल देते हैं वेट लिस्ट, फिर दूसरी निकालते हैं, फिर तीसरी निकालते हैं। नॉर्मली 3-3 महीने का गैप इसमें चलता है, पर वहाँ पे कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। इसी तरह IBPS RRB में भी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, बट नॉर्मली क्वार्टर एंड पे वो निकालते हैं, कई बार क्वार्टर ख़त्म होने के बाद भी निकालते हैं। इसी तरह IBPS के अंदर PO क्लर्क SO में भी नॉर्मली क्वार्टर एंड पे निकाल देते हैं, अगर क्वार्टर एंड पे नहीं निकालते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में भी निकाल देते हैं। फिक्स डेट उसकी भी नहीं है। पर जो रिज़र्व लिस्ट में कैंडिडेट होता है उसको एक मौका है कि शायद उसकी सिलेक्शन हो जाए, और हर साल काफ़ी लोगों की सिलेक्शन होती भी है, पर ये कोई श्योरिटी नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इफ़ एंड बट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति रिज़र्व लिस्ट में है उसकी लॉटरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, उसको फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी करते रहना चाहिए, ये मेरी सलाह है। गॉड ब्लेस यू ऑल।